Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. So, my dear students, today we will start unit number 12, the natural environment and resources. And today I will give you a complete introduction of unit number 12. So, my dear students, on page number 85, there are student learning outcomes given. And these are for the parents and the teachers to understand that by the end of the lesson, all the students will be able to learn these points. So one by one we will move forward. हम देखेंगे कि कौन से लेसन में हम कौन सा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम कवर करेंगे, कौन से पेजेस पे है वो, और आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिलेगा. So in this unit, as you know that Allah Almighty has blessed the earth with all the resources required for life even before the first human was created. Some of these resources are air, water and land. In this unit, you will learn about the resources and their utilization in order to make products for human use. तो हम इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं कि आपको पता है कि हमारी जो दुनिया है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, विच आर कॉल्ड नेचुरल. ठीक है, जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें होती हैं, they are called natural resources like air, water, land. These are called natural resources. So my dear students, हम इस यूनिट में ये पढ़ेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को यूटिलाइज करके ह्यूमन बींग्स के फ़ायदे के लिए जो है वो डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं. सो दिस इज़ अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे इन्वायरमेंट से हमें मिलती हैं एंड हाउ वी यूटिलाइज दैम. So when we will start lesson number 1, in this lesson the students will recognize that natural environment comprises of living and non-living things. And the page which is included is page number 86. So इस जब lesson number 1 हम start करेंगे तो we will discuss about कि जो हमारा natural environment है वो दो तरह की चीज़ों से मिलके बना हुआ है, living things, जानदार चीज़ें, और बेजान चीज़ों से. ठीक है, वी विल हैव सर्टन एग्जाम्पल्स इन दिस लेसन और पिक्चर्स भी हम देखेंगे एंड वी विल रियली हैव फन इन दिस लेसन. Then we will move forward towards lesson number 2. When we will start lesson number 2, the students will recognize that natural resources are essential for survival of human being. So हम different natural resources को पढ़ना शुरू करेंगे और जो सबसे पहले हम natural resource discuss करेंगे that is sun. और हम इसके बारे में students जो हैं they will also recognize the importance of natural resources. तो हम जब lesson number 2 start करेंगे तो स्टूडेंट्स जो है वो सन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में वो भी डिस्कस करेंगे. द पेज विच इज इंक्लूडेड इज पेज नंबर 87 एंड we will discuss all about the importance of sun and that it is natural resource of energy. Then we will move forward towards lesson number 3. By the end of lesson number 3, all the students will be able to recognize that natural resources are essential for survival of human being. क्योंकि हम natural resources के essentials पढ़ रहे हैं तो हम इसमें discuss करेंगे land and water. Sun हमने discuss कर लिया. Now we will discuss land and water. और उसकी क्या importance है वो भी हम discuss करेंगे. The page which is included is page number 88 and importance of land and water will be discussed in this lesson. Then we will move forward towards lesson number 4 and in this lesson the students will recognize that natural resources are essential for survival of human being and the natural resource specifically which will be discussed is air. हम हवा के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे कि कैसे हवा से जो है हमें बहुत सारे जो है फायदे होते हैं, कैसे हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. This will be done in lesson number 4. The page which is included is page number 89 and on this page we will discuss all about air. And then we will move forward towards lesson number 5. So in this lesson the students will be able to differentiate between the natural and human made materials because we are discussing about कि हमारा जो environment है it is made up of living and non-living things. Natural भी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें जो हैं हम natural चीज़ों से use करके बनाते हैं. Human beings जो हैं वो उनको बनाते हैं. So they are called man-made things. तो कुछ चीज़ें natural हो गई, कुछ चीज़ें man-made हो गई. So how they are different from each other, this will be discussed in lesson number 5.
The page which is included is page number 90. हम पढ़ेंगे इसमें कि कैसे जो है वो natural चीज़ें जो हैं वो man-made चीज़ों से different होती हैं. Then we will move forward towards lesson number 6. And in this lesson, the students will be able to recognize that people manufacture different things from natural resources to serve human needs. अब human beings जो हैं वो क्या करते हैं कि वो हम अपने आप को फ़ायदा देने के लिए वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो natural चीज़ों से बना लेते हैं. I'll give you an example. For example, आप जो बिस्किट खाते हैं that is man-made, ठीक है, और वो किस चीज़ से बनता है? वो natural चीज़ों से बनता है, just like wheat. Wheat is a natural thing. It grows from the ground. So this is how human beings, people made different things from natural resources. This will be discussed in lesson number 6, and we will discuss the story of a biscuit. कैसे बिस्किट बनता है, बड़ा मजा आएगा, हम पिक्चर्स के साथ इसको देखेंगे. Then we will move forward towards lesson number 7, and it will be a project. The project is given on page number 96 and 97, and we will perform really healthy activity in this project. Then we will move forward towards lesson number 8, which will be a review, and the review will be of all the pages, reading pages, and then we will have an assessment, evaluation by the end of the lesson, and you will learn very healthy things and different things in this lesson, in this unit. I hope we will learn very good things. Keep everybody around you safe. Have a good day, and Allah Hafiz.